इस वीडियो में हम असल में ना ये क्लाइंट है, इसकी वेबसाइट को हम दोबारा से नए डोमेन पर बना रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि इसके जो पेजेस हैं वो लूज़ हो। तो हम दूसरे डोमेन पर उसकी पोस्ट को डुप्लिकेट करके लगा रहे हैं। हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी, जस्ट कॉपी पेस्ट करना। हमने लेआउट डिज़ाइन किया हुआ है और हम एलिमेंटोर पे इसको एडिट करते जाएंगे। और सबसे पहले हमने जो है ना उसके पेजेस के नेम्स को कॉपी करना है। क्विक एडिट से जो है ना हम स्लग और वो करते हैं, जो टाइटल है उसी को जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं इधर और इसको अपडेट करते हैं तो जो बीच में डैशेस लगनी चाहिए ना वो खुद ब खुद लग जाती हैं। अब हमने इसको एडिट करना है, तो गो टू टोइंग सर्विस और हमने इसको अपडेट करके लगाना है। इसके हमने यहाँ पर भी टाइटल कॉपी पेस्ट कर देना है। बाकी चीज़ें वहीं उसी तरह सेट हुई हुई हैं। जो बाकी इमेजेस हम बाद में चेंज कर लेंगे। बस इधर से ये कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया और पब्लिश। उसके बाद जो इसका ये URL बना, इसको इधर लगाया, पब्लिश यहाँ। अब हमने जो है ना इसी तरह बाकी पोस्ट का करते जाना है। डुप्लीकेट करने के लिए एक प्लगइन होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप वर्डप्रेस पे थीम इंस्टॉल करते हैं ना तो ये डुप्लीकेट पोस्ट की ऑप्शन नहीं होती। उसके लिए हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है। वो फ्री प्लगइन होता है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हमने इसका नाम इधर एडिट कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट वी करते हैं। जब हम कंट्रोल शिफ्ट वी करते हैं तो डिज़ाइन फॉर्मेटिंग जो होती है ना वो टारगेट एरिया की सेम रहती है। द मोस्ट एफिशिएंट टोइंग सर्विस इन बूडा टेक्सास, ये तो हमने अभी किया था। द गो टू टोइंग सर्विस इन लेकवी टेक्सास, द मोस्ट एफिशिएंट टोइंग सर्विस इन। सब में इन्होंने बस तकरीबन डुप्लीकेट कंटेंट डाला हुआ है। लो क्वालिटी कंटेंट है, बट we have to create these pages, so we are। मैं तो ना करती अगर मेरी मर्जी होती, बट ये मेरा क्लाइंट नहीं है। क्योंकि हमें जो है ना कि हमें पेज कंटेंट को अपग्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल गूगल जो है ना वो क्रॉल कैप्स लगा देता है जब आप लो क्वालिटी कंटेंट वेबसाइट्स पे रखते हैं। तो क्रॉल कैप भी लगा देता है, इंडेक्सेशन कैप भी लगा देता है। जब इंडेक्सेशन कैप लगा देता है ना तो फिर आप अच्छे अच्छे पेजेस बना के वेबसाइट्स पे अपनी लगाते रहेंगे, तो वो इंडेक्स नहीं करेगा सारे पेजेस को।
हमने तकरीबन 1 2 3 4 5 जो है ना 8 मिनट्स में कर लिए और ये अब हमने सारी करनी है। फिर हमने इसका नाम और यूआरएल अपडेट करना है, फिर हमने इसका हाँ लगता है हम रिचार्ज हो गए। नहीं सिर्फ फर्स्ट टाइम शादी के लिए, उसके बाद जब मर्जी। नूर पहन सकती है, अगर नूर को पहनना है नूर पहन सकती है। गुड, ठीक है।
ठीक है, वो आपके कपड़े से मैचेंगे और हम नहीं, आप अभी पहन सकते हो। आई टेक माई वर्ड्स बैक, आप पहन सकते हो। मैं पहनने दे सकती हूँ। अच्छा, अभी कितने रह गए तकरीबन? अच्छा हाँ, हमने ये देखना था कि डुप्लीकेट पोस्ट कैसे करते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करते हैं तो प्लगइन्स आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं होते। ये डुप्लीकेट पेज प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं। इस तरह के और भी हैं जिनका यही फंक्शन है, लेकिन जब आप पब्लिक मतलब प्लगइन्स ढूंढ रहे हो ना, तो आप लोगों को चाहिए कि हम इससे डिसाइड करते हैं कि कौन सा बेहतर है, जिसकी सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशंस हों और रिव्यूज़ आई हों। तो अब ये वाला हमने किया हुआ है, ये भी है, इसका भी वही फंक्शन है, इसकी भी रिव्यूज़ अच्छे हैं और रिसेंटली अपडेटेड प्लगइन्स अच्छे होते हैं, कंपैटिबल होने चाहिए। बेसिकली दिस इज़ बेटर, लेकिन मैं क्योंकि हर जगह यही यूज़ करती हूँ, ये वाला, उधर भी यही वाला कर दिया। एनीवे, टॉप 3 प्लगइन्स जो भी होना जिनके एक्टिव इंस्टॉलेशन ज़्यादा हो, 100,000 से रिव्यूज़ अच्छे हों, रिसेंटली अपडेटेड हों और कंपैटिबल हों, इनको आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। और हर तरह के पर्पस के लिए प्लगइन्स जो हैं वो वर्डप्रेस की बिल्ट इन लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं, उन पर इंस्टॉल करके तो डिफरेंट चीज़ें हम कर सकते हैं।